हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग इन जय हिंद। कभी कभी क्या होता है ना, आप बात करते करते कभी कभी आपकी आंसू निकल जाता है, स्टार्ट क्राइंग। इज इट सो बैड टू क्राई? कई लोगों के जहन में होता है कि द पीपल हु क्राई आर द वन हु आर वीक। सो इज इट एक्चुअली द साइन ऑफ वीकनेस? कभी कभी मैंने इंटरव्यूज लेते हुए भी देखा है कि यू नो particularly the people who have very beautiful heart or who are really good at heart, they end up, while telling about something, they start crying. Like कभी कभी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहे हैं, चाहे बॉयफ्रेंड के बारे में बता रहे हैं, रिलेशन टूट गया है, अचानक से याद आती है और आंसू निकल जाते हैं। तो क्या ये बहुत गलत है? इज इट रॉन्ग टू क्राई while you're talking, while you're expressing? I'll say no, it's not wrong. It is called as emotional catharsis. क्या हुआ है कि आपके यहाँ अब तक गले तक इमोशन भरे रहते हैं, भरे रहते हैं, भरे चीजें भरी हुई है। तो व्हाट आई मी कॉल एज इट इज पेंट अप, इट इज फिल्ड टिल हियर एंड it is looking for a venting out. And when you start talking about it and when you start venting it out, then it just it just it's rather, I may say you don't have any control on it, and it just releases, you can say, it releases and gives you a sense of relief. So it's a psychologically designed thing, crying. Generally what will happen, the people who are not crying are not able to vent out and they are likely to explode. तो इमोशनल कैथारसिस होता है, खासकर साइकोलॉजिकल इंटरव्यूज में होता है। उससे आपकी वीकनेस का या आप बहुत वीक हैं ऐसा नहीं है, इससे कुछ लेना देना नहीं। So here I want to tell you something more about rational thinking and being socially intelligent. There are two things. One is rational thinking, जिसको आप reasoning ability से भी link कर सकते हैं. Now reasoning ability is probably nothing but your ability to think rationally about a topic, keeping aside the emotional factors. ये एक कला है। आपको उस कला में क्या करना है कि आपको रैशनली सोचना है। सपोज suppose someone's father or mother has expired. Now what is expected from you? You'll definitely be emotionally distraught. But what is expected? You are expected to take certain actions at that point of time. Forget about father and mother. Suppose you are actually in a war and suppose your fellow is wounded, your best friend is wounded, your buddy is wounded. You're not supposed to cry on that at that moment. Rationally, you're supposed to first give him the first aid, shift him as soon as possible to the nearest medical aid. क्राई कर लेना बाद में। तो रैशनल थिंकिंग का मतलब ये है कि योर एबिलिटी टू अप्लाई योरसेल्फ rationally even in stressful situations, keeping the emotions aside. Now, coming to the emotional part of it, there is something known as emotional quotient, or to what I may also call it as, emotional intelligence. बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत लंबी बात हो सकती है, बट अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड व्हाट इज सोशल इंटेलिजेंस को अगर हम ऐड करना चाहें इसमें, व्हाट आर दीज थिंग्स? Emotional intelligence versus social intelligence is nothing but your ability to put yourself in the shoes of other person and feel the pain. अब आप सोचेंगे ये क्यों कहते हैं कि शूज ऑफ अदर पर्सन? इसलिए कहते हैं बिकॉज जो पहले के ज़माने में शूज़ आते थे, हमने तो पहने हैं वो शूज़, आई डोंट नो अभी नहीं आते हैं वो, बिकॉज अभी कंपनीज हैव अंडरस्टूड कि कुछ ज़्यादा ही सीरियस प्रॉब्लम है। सो दे पुट अ कुशनिंग देयर इन द बिहाइंड पोर्शन ऑफ द शूज़ नियर द हील्स। बट पहले जो शूज़ आते थे, खासकर बाटा के जो शूज़ आते थे, तो उसमें इतना उसका चमड़ा ऐसा अजीब सा होता था ना कि वो शू बाइट कर देता था। इट यूज्ड टू कट देयर। Now, every time you wear the shoes, it cuts there and it keeps cutting there, and it's really painful. Now, you will say you're wearing a new shoe and you say it's shoe bite. So, now somebody might say, what shoe bite? You're wearing new shoes. Basically, he is not understanding your pain, he or she.
But if someone has gone through that similar pain, and then he will realize, oh my God, it is really painful. So basically, what is he doing now? He is putting himself in your shoes, and he's feeling that pain. That is what is called emotional intelligence, or that is what may be called as empathy. तो आप किसी से एम्पैथाइज कीजिए. अगर आपको अपना ईक्यू बढ़ाना है, इमोशनल क्वोशिएंट बढ़ाना है, you need to empathize with the person. You don't have to sympathize. आप किसी पे sympathy मत दिखाइए. सिंपैथी दिखाना कैसा हो गया, ओहो हो आपको तो चोट लग गई, आपको तो बहुत बुरा लग रहा होगा. बेसिकली यू आर टॉकिंग ऑन द सरफेस. एंड एम्पैथी का मतलब यू आर एक्चुअली फीलिंग द पेन. तो वन ऑफ द बिगेस्ट पेन्स यूज्ड टू बी दिस शू बाइट पेन, एंड दैट्स व्हाई दिस केम. दूसरा पेन होता है वो टीथ वाला पेन, दांत का दर्द बहुत खतरनाक होता है. तो इफ यू रियली वांट टू वर्क अपॉन योर emotional intelligence, if you really want to connect to people, please work on your empathy factor. Sympathy will appear so cheap. Sympathy is like, feeling sorry for someone. Now, no one wants the other person to feel sorry about. उसका भी अपना आत्म स्वाभिमान है, उसको भी बुरा लगेगा कि अगर कोई उसके ऊपर सॉरी फील कर रहा है. बट एम्पैथी इज लाइक गोइंग डाउन टू हिज लेवल, going down and understanding his problem, his issues, what exactly is the concern, और फिर वहां से बात करना. आप रियल लाइफ में भी करके देखो. मुझे तो आश्चर्य होता है, कई लोग अपने घर वालों से भी एम्पैथाइज नहीं करते. इट माइट साउंड लिटिल हार्श बट दैट इज द फैक्ट. घर वालों से भी ऐसे कनेक्ट करते हैं वो लोग जैसे कि मतलब किसी बाहर वाले से कनेक्ट कर. Like suppose, and that is how it reflects. So SDs में क्या लिखते हैं? What does your parent think of you? What does your friend think of you? What does your teacher think of you? What is the idea behind all this? Is basically the connection that you share with them. इंटरव्यूअर भी सवाल पूछता है आपकी मदर के बारे में, आपके फादर के बारे में. ही वुड लाइक टू नो हाउ वेल डू यू कनेक्ट विद देम. एंड कनेक्शन का मतलब वो एम्पैथी तो है. कई लोगों को ये नहीं एहसास होता है कि देयर मदर प्रॉब्ली इज क्वाइट अलोन. What has happened is you have moved on, father has moved on, people have moved on, they are all busy, and she is the probably only one, and there is no one understanding her, no one connecting with her. It's there possible. Why no one is connecting with her? Because no one is understanding. Yes, she also has her own catharsis pent up somewhere. So while you have moved on with your life, or moving on with your life, you can't leave your mother behind. That is what SD is all about. Sometimes your father might be left behind. Maybe he's aging. Maybe while you're moving up, I know certain students of mine, not students of mine, sorry, certain young students who have put their children, parents on a lot of loan and flown to Canada. Now they are not interested. They have no concern now whatsoever. फोन किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, अपनी लाइफ मस्त है, बाहर में जाए जनता. ऐसे लोग हैं. आप ऐसे लोग मत बनिए प्लीज. एम्पैथाइज कीजिए, प्रॉब्लम को समझिए. सिमिलरली आपके फ्रेंड्स के इश्यूज हो सकते हैं. ही माइट बी गोइंग थ्रू अ लॉट. You call him the best friend, but you really don't know what exactly is his problem. Where is he struggling to? Maybe he's not able to tell you. Or maybe you have not given him that empathy quotient to feel your pain. Sorry, to feel his pain. आप तो चल भाई खाना खाते हैं, चल भाई चाय पीते हैं, चल भाई ये करते हैं वो करते हैं. आप सिर्फ उसी डोलड्रम में घूम रहे हैं, आप कनेक्ट नहीं कर रहे. आप अगर उससे एम्पैथाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि what exactly is the issue, what is bothering him, how well I should be. That is what the entire perimeter of assessment is based upon these people only. If you see,
इंटरव्यू में क्या है, क्यों एम्फेसिस है आपके फ्रेंड्स पे, आपकी फैमिली पे क्यों एम्फेसिस है, आपके नेबरहुड पे क्यों एम्फेसिस है, इसीलिए है। क्यों साइकोलॉजिस्ट जानना चाहता है आपकी फीडबैक्स फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम टीचर्स, फ्रॉम योर बेस्ट फ्रेंड्स, because he wants to know how well are you connecting with them. अगर आप उस तरह के इंसान हैं जिसका सोशल इंटेलिजेंस बहुत लो है, जो प्राइमरीली सेल्फिश है, जो प्राइमरीली अपनी दुनिया में मस्त है, कई लोग कनेक्ट ही यूज करने के हिसाब से करते हैं। देयर आर सम चीप पीपल लाइक दैट, देयर आइडिया ऑफ कनेक्टिंग टू यू और समबडी एल्स इज कि मुझे इससे क्या फायदा होगा। मैं बता रहा हूँ चीप तो होता ही है, ये दिखता भी है बहुत क्लियर। सो अगर आप उस तरह के इंसान हैं तो आप कैसे लीड करेंगे अपने प्लेटून को, कैसे लोगों को समझ जाएंगे कि उनकी समस्या क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? अपने ईक्यू को, अपने एम्पैथी फैक्टर को जरा चेक कीजिएगा, खुद को नंबर दीजिएगा 10 में से, बताइएगा मुझे कमेंट में। अगर आपका एम्पैथी फैक्टर 10 में से 11 नहीं है, आप यू आर नॉट लिविंग एज ए ह्यूमन, आई एम टेलिंग। 10 में से 11 बोल रहा हूँ। You cease to stay or live like a human if you're not connecting at that level, one on one, that beautiful level at which humans connect. What is expected from you? So, crying is just venting out emotions. Crying is just a psychological process which allows you to release certain pent up emotions, held up emotions. There's nothing wrong to cry. Cry if you have to. But at the same time, you should be rational enough to take decisions which are required at that point of time. So, a lot of things are there actually. Personality keeps evolving and growing. क्या काम है मेरे जैसे लोगों का, मेंटोर्स का, जब मैं आपकी इवैल्यूएशन करूं, जब आपके साथ में क्लासेस करूं, ऑफलाइन करूं, ऑनलाइन करूं, मेरा तो यही काम है कि आपको उन चीज़ों से ज़रा रूबरू कराऊं, आपको बताऊं कि यहाँ पे ये समस्या है। As a person, your evaluation in SSP as a person, you as a person, the personality, that is what it is. How do you connect to the people? How will you respond to a situation? What is your, response mechanism? What is your held up mechanism? आप कहाँ अटक रहे हैं, क्यों अटक रहे हैं, कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, यही होना चाहिए। That is how you can build your business. नॉट बाय टेलिंग कि इस कहानी का ये आंसर लिख दो, इस कहानी में ये चिपका दो, इस सवाल का ये जवाब दे दो, ये की तैयारी। So thank you so much, and do subscribe to my channel, share if you like this video. If you wish to be part of my guidance program, do let me know, and we can work together towards your journey. And what else? If you have any topics, any ideas in your mind where you want me to speak about and talk about, I'd be happy to do that. Thank you so much for your time. Thank you, and Jai Hind.